Anji, welcome to the online platform of Coachify. Now let's start with today's newspaper that is dated 7th January. So जो सबसे पहली न्यूज़ आई है ये जो टॉपिक था ये कल भी आया था न्यूज़ में. द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज आदित्य L1 जो आपका सन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था दैट रीचेस डेस्टिनेशन इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट. अब यहाँ पे आपके काम की 2-4 चीज़ें हैं. द वेरी फर्स्ट इज द बेसिक्स ऑफ this project. Second is the L1 point. एंड जब आप बेसिक्स की बात करते हैं तो इसकी जो डेट है कि इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके क्या क्या वर्क्स रहेंगे, क्या क्या काम का है. एंड नेक्स्ट इज योर L1 पॉइंट, दैट व्हाट इज एन L1 पॉइंट. सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है आदित्य L1, इसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर ऑन September 2, 2023. एंड ये सेम चीज़ कल के पेपर में भी आई थी. से इसमें मेंशन किया हुआ है इंडियाज मेडन सोलर मिशन आदित्य L1 reached the L1 point on Saturday, that is 6th of January. सो ये डेट आपको याद रखनी है कि जो आदित्य L1 है वो इसकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर कितनी तारीख को पहुँचा है, दैट इज 6th January Saturday, एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम अर्थ ऑन September 2, 2023. यानी लगभग इसको अगर आप देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर लगभग 4 months इसको लग गए. सो आफ्टर अ जर्नी ऑफ 4 months इट हैज़ रीच टू इट्स डेस्टिनेशन दैट इज L1 पॉइंट. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये L1 पॉइंट्स क्या होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू L1 पॉइंट्स का बेसिक मतलब होता है इट्स अ लोकेशन जहाँ पर 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है. ऐसे अर्थ और सन के बीच में 5 पॉइंट्स हैं. यहाँ पे L का मतलब होता है लैग्रांज पॉइंट्स इनको बोलते हैं. दिस नेम इज बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड दीज पॉइंट्स. सो टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से L1 को चूज किया गया एज द मोस्ट सूटेबल पॉइंट to study the sun, and this point lies between the sun earth line and it is about 1.5 million kilometers from earth. और ये जो 1.5 million kilometers का distance है it is around 1% of the earth sun distance. So इस complete news में the basics are कि आपने आदित्य L1 को कब लॉन्च किया था, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, इसके टारगेट्स क्या क्या हैं और ये कहाँ पे आपने इसको सेटल किया है और कितनी तारीख को ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है. जो डेस्टिनेशन है दैट इज L1 पॉइंट. व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द L1 पॉइंट. ठीक है, चले. ये जो आपका आदित्य L1 है इसकी जो मिशन लाइफ है दैट इज अराउंड 5 years. ये भी आपने ध्यान रखना है. ठीक है. तमिलनाडु नॉट हिट बाय सेंटर्स मूव टू मेक ABPS मैंडेटरी फॉर MG नरेगा वर्कर्स. ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि आपके जो MG नरेगा के वर्कर्स हैं उनको जो पेमेंट मिलता है that will be done on the basis of Aadhaar based payment system. ABPS, Aadhaar based payment systems. It was made mandatory recently 2-3 days back. और इस न्यूज़ में the basics are about the मनरेगा MG नरेगा स्कीम जो है उसको कब लॉन्च किया गया था, इस एक्ट का नाम क्या है, स्कीम की फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम. these things have already been discussed. अब यहाँ पे ये न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु इज़ नॉट हैप्पी with this move of the central government. Why it's not happy, इसमें आपने जाने की ज़रूरत नहीं है. The basics are ABPS and the scheme MG नरेगा. Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है that is an international news कि इंडिया का जो नेबरिंग नेशन है बांग्लादेश उसमें अभी इलेक्शंस होने वाले हैं ऑन संडे. और वहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एक हसीना, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू विन अ 4th straight term. सो अब इलेक्शंस हो जाए फिर उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे विल सी व्हाट वी हैव टू लर्न. अब इसमें काम की चीज़ है कि जो बांग्लादेश है उसकी जो पार्लियामेंट है उसकी स्ट्रेंथ है 300 मेंबर्स और जो रजिस्टर्ड वोटर्स दे आर 119. लगभग अराउंड 120 million वोटर्स आर देयर. एंड द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज काजी हबीबुल अवाल. इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है. ठीक है, वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ एक तो VVPAT टर्म न्यूज़ में था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज इन न्यूज़ और एक और न्यूज़ थी कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का उसमें कमेटी का गठन होता है और वो जो कमेटी है उसमें CJI इज़ ऑल्सो ए मेंबर. बट रिसेंटली एक एक्ट के थ्रू उस CJI को हटा करके दे आर ट्राइंग टू हैव अ कैबिनेट मिनिस्टर.
और इसी के अगेंस्ट में एक प्लिया अभी रजिस्टर हुई है सुप्रीम कोर्ट में. So this is ongoing matter about election commission. And if we go for the static part of the election commission, so you already know that it is a constitutional body starting from article 324 to 329. ठीक है. और जो अपॉइंटमेंट होता है that is finalized or done by the president. Now let's go for the basics of Bangladesh. इसकी लोकेशंस क्या है और let's see on the Google map. So this is India और ये आपके हो गए Bangladesh. This is your Bangladesh. ठीक है. So this is the capital Dhaka. And if we talk about the neighboring states of India, the first is your West Bengal, जो कि यहाँ तक है. Then we are having Meghalaya this side, this much. Then we are having Assam. Then we are having Tripura. And then we are having Mizoram. So first, second, then Assam is third, and we are having Tripura as fourth, and then we are having Mizoram as fifth. So total 5 states हैं आपके इंडिया के जिनकी बॉर्डर बांग्लादेश को लगती है. Apart from that, बांग्लादेश जो है it's not a landlocked state. इसकी जो बॉर्डर है या इसको जो नियर बाई ओशन या जो वाटर बॉडी लगती है that is your Bay of Bengal. और आपकी जो गंगा रिवर है वो भी यहीं से आती है. ठीक है. Moving on to the next news. Israel Hezbollah exchange fire across Lebanon border. So you all know Israel Palestine का भी issue चल रहा है. So this is the area where the conflict is going on, Israel and Palestine. और एक और जो आपका nearby state है that is your Lebanon. So this is Lebanon, this area, this state is Lebanon. And this is your Gaza Strip. और ये वो एरिया है जहाँ पर आपका इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है. Okay, so there is a group, extremist group, Hamas, that is working in the Israel-Palestine dispute. Similarly, there is an extremist group in Lebanon as well, Hezbollah, that is also interfering in this dispute. अब issue ये है कि that Lebanon and the Hezbollah group are supporting Palestine. So they are now attacking on the Israel, and that is the news. See, Israel Hezbollah exchanged fire across the Lebanon border. So this is your Lebanon border. So they are having dispute. अब इसके case में the basic locations of Israel Palestine, the concept of Hezbollah, and the locations of the Lebanon are important. And more important thing, this Hezbollah group is backed by Iran. कल परसों में एक और न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक ग्रुप था that was also backed by Iran, and that group was this Houthi rebels who have attacked in the Red Sea against like showing their protest against Israel and support to the Palestine. So the Houthi group as well as the Hezbollah group are supporting the Palestine and its Hamas group, and they are against Israel. And the more important thing, इसके आसपास जो वाटर बॉडी है ना आज के मेडिटेरेनियन सी लगता है. Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है that is about autumn of militants. It's about an extremist group उल्फा. अभी रिसेंटली जो उल्फा ग्रुप है उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया था. They have signed a peace accord with the union government. ठीक है. उल्फा is an extremist group जिसका पूरा नाम है United Liberation Front of Assam. And it was formed way back in 1979 on April 7th. And the objective is to establish a sovereign socialist Assam that too through an armed struggle. So the main concern of the Ulfa group is that there is an ongoing illegal migration into their ancestral land, that is Assam. And that's the main issue. And with that, they have extended up to Myanmar, Bangladesh, as well as Bhutan, and try to set up camps in these nations. Now, this is Assam. So, this is your Assam state, something like this. So, यहाँ पे your Ulfa group is active, and they have tried to outreach in Bhutan, Bangladesh, as well as Myanmar, and their target is to establish a sovereign, and the target is to establish a sovereign socialist Assam, okay?
And however, they have recently reached a peace accord with the central government. So that's a positive step towards establishing peace in the Assam state. The next news is this Claudine Lee. She is the first black president of Harvard University. कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें we had a news about a woman who was the first woman DGP of Maharashtra state, and her name was Rashmi Shukla. Now we are having a news about the another woman who is the first black president of Harvard University, Claudine Gay, and she is connected to Harvard University since last 17 years, and she works in the fields of race and politics. However, she was appointed as the chairperson or the president last year in July 2023. And now she has resigned after she had the charges of plagiarism. उन्होंने जो अपनी PhD submit की थी in the year 1998. So there are concerns that her PhD is plagiarized. Okay, so just remember the name of the university, and that's it. And in the date when she resigned on January 2nd. I think that's it for today's newspaper. Thank you.